Now, incident response. इंसिडेंट का मतलब ही बेसिकली अटैक है और रिस्पॉन्स का मतलब है हाउ यू कैन टेक ओवर दिस काइंड ऑफ अटैक। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक होता है, इस टाइप की कोई भी किसी भी टाइप का अटैक होता है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सेस कर सकते हैं टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ अटैक। नाउ इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज अ methodology an organization uses to respond to and manage a cyber attack. An attack or data breach can wreak havoc, potentially affecting customer, intellectual property, company time and resources, and brand value. Incident response aims to reduce this damage and recover as quickly as possible. ऑब्वियसली बात है, अगर अटैक होता है तो प्राइमरी एम क्या है कि भाई अटैक तो हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट हाउ वी कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम दिस अटैक। देन investigation is also a key component in order to learn from the attack and better prepare for the future। अब ऑब्वियसली बात है, जब अटैक होता है तो आपको अटैक से ओवरकम करना है और ये देखना है कि यार ये अटैक इस बार जो हुआ वो किस रीजन से हुआ, सिस्टम में कहाँ फॉल्ट था जिसकी वजह से अटैक हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस लिमिटेशन को आप रिमूव कर सकें, ताकि एटलीस्ट जिस रीजन से पहले अटैक हुआ वो फ्यूचर में रिपीट ना हो पाए। So point is, investigation is also a key component in order to learn from the attack and better prepare for the future. Because many companies today experience a breach at some point in a time, well developed and repeatable incident response plan is the best way to protect your company. Now the point is, why is incident response important? Now, as the cyber attack increases in a scale and frequency, incident response plan become more vital to company cyber defense। और ऐसा ऑब्वियसली बात है क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था इतने अटैक्स, बट अब वक्त के साथ साथ साइबर अटैक्स की भी फ्रीक्वेंसी काफी इंक्रीज हुई है। पुअर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैन एलिनेट कस्टमर and trigger great government regulations, target repeated failure to develop effective internal security infrastructure, made its 2013 hack considerably worse. Equifax decision not to share information without public in its 2017 hack significantly hurt its brand। तो ये एक इंसिडेंट है। इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज क्रिटिकल रिगार्डलेस ऑफ योर इंडस्ट्री। आप कैसी भी इंडस्ट्री यूज कर रहे हो, आपके लिए ये रिस्पॉन्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नाउ हु हैंडल द इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कौन इनके लिए एक मेन कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको टेक केयर करती है। सो टिपिकली an incident response is conducted by organization computer incident response team। ये टीम है बेसिकली जो इस टाइप के अटैक के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करती है, और जनरली से आल्सो known as cyber incident response team, CIRT, usually are compromised for security and general IT staff along with the member of legal, human resource and public relation department। A CIRT is a group that is responsible for responding to security breaches, viruses, and other potential catastrophic incidents in enterprises that face significant security risk. In addition, technical specialty capable of dealing with specific threat, it should include experts who can guide enterprise executive on
appropriate communication in the wake of such incident. Now, there are some steps by which an incident response team can take care of the situation. वो major steps क्या क्या है? The first step is the preparation. The most important phase of incident response is preparing for an inevitable security breach. Preparation helps organization determine how well their CIRT will be able to respond to an incident and should involve policy, response plan, strategy, communication, documentation, determining the CIT member, access control tools and trainings. Then identification. Identification is the process through which incidents are detected ideally, promptly to enable rapid response and therefore reduce the cost and damage. For this step of effective incident response, IT staff gather events from log files, monitor tools, error message, intrusion detection system, and firewall to detect and determine incident at their scope. तो ये obvious से measures हैं जिन्हें teams करती हैं. Third point is the containment. Once an incident is detected or identified, containing is a top priority. And the main purpose of a containment is to contain and damage and prevent further damage from occurring. एक बार अटैक हो गया, दैट्स मीन अब सिस्टम आपका डैमेज किया गया है, तो जितना जैसे ही आपको ये पता चलता है कि अटैक हुआ, तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि बस अब फर्दर डैमेज को आगे बढ़ने से रोका जाए. ओके, ये तो आपकी टॉप प्रायोरिटी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ अ हाउस गेट अ फायर, अगर किसी हाउस में आग लगती है तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले आग बुझाना, ताकि वो फर्दर बाकी के एरियाज में जहां पे अभी फायर नहीं है वहां उनको अफेक्ट ना करे. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल ऑफ साइंस रिकमेंडेड स्टेप्स will be containment phase should be taken specifically to prevent the destruction of any evidence that may be needed later for prosecution. These steps include short-term containment, system backup, and long-term containment. कई steps होते हैं जिनमें कई लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट यानी कि जो लंबे टाइम के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव रहे, और कुछ होता है शॉर्ट टर्म जो तुरंत ही ऑर्गेनाइजेशन को करंट सिचुएशन में आपके लिए बेनिफिशियल हो. Then one point is the eradication. Eradication is the phase of effective incident response that entails removing the threat and restoring affected system to their previous state. Ideally, while minimizing the data loss, ensuring that the proper steps have taken to this point, including measures that not only remove the malicious content but also ensure that affected systems are completely clean, are the main action associated with eradication. Fifth point is the recovery. Testing, monitoring, and validating systems while putting them back into production in order to verify that they are not reinfected or compromised are the main tasks associated with this step of incident response. This phase also includes decision making in terms of time and date to restore operation, testing and verifying the compromised system, monitoring for abnormal behavior, and using for testing, monitoring and validation system behavior. तो ये some basic steps हैं. I don't think कि इनमें किसी को भी कोई ज़्यादा परेशानी हो रही होगी. And the last point is the lesson learned. Lesson learned is the critical phase of incident recourse because it helps to educate and improve future incident response effort.
अब लेसन लर्न का सिंपल सा मीनिंग ये है कि यार इंसिडेंट हो गया, आपने रिकवर किया, चलो आपने ओवरकम किया, पर इन द एंड आपने से क्या सीखा, किन कमियों से ये हुआ, क्या रीजंस थे। सिक्योरिटी तो कंपनी इस इंसिडेंट से पहले भी मान के चली रही होगी कि दे आर सिक्योर, बट स्टिल वो इंसिडेंट हुआ जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। तो ये सारी चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि अब फ्यूचर में वो ऐसा क्या करे कि इस टाइप के अटैक से बचे, और वो उसको ये भी देखना चाहिए कि ऐसे क्या स्टेप्स को वो इम्प्लीमेंट करे कि अटैक अगर होते हैं तो वो एज सुन एज पॉसिबल उनको उनसे रिकवर हो पाए। So this is the step that give organization the opportunity to update their incident response plan with information that may have been missed during the incident, plus complete documentation to provide information for future incident. डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर रखनी चाहिए जिसकी वजह से इस चीज को अवॉइड कर सके। Lesson learned report give a clear review of the entire incident and may be used during recap meeting, training material for new CIRT member as a benchmark for comparison, ताकि फ्यूचर में जो नए लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हो या अदर, उनके लिए ये एक लेसन लर्न करने का एक और बातें सीखने का एक स्टेज होनी चाहिए जिसके हेल्प से वो फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को टेक केयर कर सके, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को।